What will happen if you don't score well in your 12th boards? Is it end of your career? Or you have options that you can look for if you don't score the desired percentage that you wanted to. Guys, that is what I'm gonna answer in this video. So guys, make sure that you watch the video till the end कि अगर समझो किसी रीज़न से आपके 12वीं के स्कोर अच्छे नहीं आते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन है. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please do subscribe. दो रीज़न के चलते हमारे परसेंटेज कम होते हैं. एक तो हमने बिल्कुल ही पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया और दूसरा कि हमने कोशिश की बट नहीं हो पाया. किसी भी रीज़न से अगर हमारे बोर्ड्स में कम परसेंटेज आते हैं गाइज, दिस इज़ नॉट द एंड. येस, आई वांट टू टेल यू दिस इज़ नॉट द एंड. आई स्कोर्ड 52% इन माई 12th. तो क्या मेरा करियर नहीं बना? I studied in the best college in our country. I worked with the best of the media company in our country. तो सब कुछ पॉसिबल है अगर आप 100% कमिटमेंट देते हो. तो अगर आपका परसेंटेज कम आया है, पहली चीज़ आपको करनी है स्टे काम. हियर आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू द फैमिली, रिलेटिव्स एंड पेरेंट्स. प्लीज़ डू नॉट क्रिटिसाइज द किड. इट्स ओके, इट हैज़ हैपेंड नाउ. अगर परसेंटेज कम आ गया, अब तो कुछ बदल नहीं सकता. आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे के थोड़े बहुत चेंजेस ले आओगे, बट अगर परसेंटेज आ गया है तो उसके हिसाब से पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हम कौन से कॉलेज के लिए एलिजिबल है. और कॉलेज चुनने के पहले हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा कोर्स है जो हमारे लिए बेस्ट सूटेड है. येस गाइज, यू हैव टू सेलेक्ट अ करियर ऑप्शन फॉर योर सेल्फ विच विल सूट यू इन टर्म्स ऑफ कि आप इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत बच्चे जा रहे हैं तो हम भी चले जाएंगे, हमारा करियर बनेगा. वैसे नहीं करना है. इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स साइकोलॉजी, डू दैट. इफ़ यू आर अ पर्सन हु लव्स मीडिया, do that. If you're a person who loves engineering, do that. Do not do a course just because ये ट्रेंड में चल रहा है तो मुझे कर लेना चाहिए. ऐसा नहीं होता है. Your career is you, which means कि अगर मेरा potential में 100% यूज़ करूँगी तभी जाके I can excel in whatever I do. So for that, if you are confused or you're stuck, I do one-on-one personal counseling session. Guys, you can get in touch with me on a call or a Zoom call, discuss that what you really want to do in your life. I'll help you figure out the course and the college that is best suited for you, and accordingly, you can take your decision. Now secondly, if you don't get a good college, obviously with your percentage, you can do lot of add-on courses. If you want to know, I will put some of those in the description box below कि अगर आप plain BCom लेते हो या फिर आप BMS लेते हो एक average college में, there are lot of add-on courses that will complement your degree, because at the end of the day, you will get a graduation degree from the college that you're doing is affiliated with a university. Like you will get a degree of Mumbai University, Pune University or Delhi University, whichever university that the college is affiliated with. Now with that affiliation, if you do a skill-based program, that will help to strengthen your CV, which means your portfolio will be stronger and that will help to get you a better job. So that is what is the ultimate goal. And if you're not able to get a good college in your UG, you can definitely aim for a reputed MBA college or a master's college or for a post-graduation college, and that too after few years of job. Obviously, I do not recommend MBA directly after graduation. It's better to get a work experience and then go for MBA. But if you want to opt for any PGP program or any PGD program which is for 9 months or 18 months, then yes, you can do it in continuity because you are doing an average course which might not give you the leeway or the eligibility to enter certain programs. In that case, you can consider continuity. एंड येस, डेफिनेटली द थर्ड ऑप्शन इज चेंजिंग योर कॉलेज. अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, डूइंग इंटर्नशिप एज मच एज पॉसिबल. मतलब कि ऐसा नहीं कि हर 3 महीने में इंटर्नशिप करो, बट आपका जो 3 साल है उसमें आपको मिनिमम 3 इंटर्नशिप करनी है सो दैट यू गेन इनफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज विद एनी एड ऑन सर्टिफिकेट. तो अगर आप ये चीज़ें करते हो, guys, do not worry, you can still be brilliant, earning lakhs of rupees per month. It is all on your skills and your portfolio more than just a college or a degree. So guys, I just want to say this is not the end. You can do lot in your life, not only with education but gaining lot of practical knowledge which complements your degree, and there you go. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.